Yes, it is. Why? Because if a client comes to you and he's just paying you, and do you think will that person will come again, or are you still in a doubt? Hello and welcome to the show which says What's Your Plot by Mansi Malhotra. And today our topic is not only on emotions but on marketing as well. आजकल मार्केटिंग बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए. सो इफ यू आर ऑल्सो ट्रैप्ड वेयर यू आर डूइंग एवरीथिंग बट नॉट ग्रोइंग ऑन दैट पेस वेयर यू एक्चुअली वांट टू बी, और आप तब से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो यार मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूँ, क्या मेरा लैकिंग पॉइंट है, तो शायद आपका वो एक इमोशनल टच है जो आप और आपका क्लाइंट फील नहीं कर पा रहा है. इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बिल्ड द ब्रिज बिटवीन मार्केटिंग एंड इमोशनल मार्केटिंग. मार्केटिंग सब कर रहे हैं और शायद आप भी कर रहे हो, बट वो एक इमोशनल टच नहीं आ रहा है. You are doing that influential marketing, you are doing every kind of marketing, but अगर हमारा वो एक इमोशनल टच नहीं है तो हम अपने क्लाइंट को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पा रहे. बिकॉज वंस द क्लाइंट ट्राइड योर सर्विस, they liked it for a while and now they have moved on because they are getting the same service in a better price. But how will the client stay with you for a longer term is the personal touch, and वो personal touch बनाना बहुत जरूरी है. आप लोग पर्सनल टच कैसे बना सकते हैं? नॉट जस्ट बाय शेयरिंग इमोशंस बट एक्चुअली मेकिंग देम फील लाइक होम, गिविंग देम द रियल सजेशन, नॉट ओनली थिंकिंग हाउ यू कैन अर्न बेटर फ्रॉम देम बट गिविंग देम रियल सजेशंस कि अगर उनके 10 रुपए भी बचते हैं तो वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यू आर नॉट रियली in the phase of earning but suggesting them as a family. मैं ये नहीं कह रही कि तुम हर एक क्लाइंट को अपनी फैमिली बना लो, but make them feel like home. Be a real human being. Everybody is here to earn. As a client, they know that you will be earning something, and as a person who is providing a service or a material to them, you are also in the market to earn. Of course, we all know that. But अगर हम एक realistic face दिखाएंगे client को, they will trust us more. They will blindly trust us maybe where they can refer more clients to you. अगर आप किसी भी तरीके की मार्केटिंग कर रहे हो, किसी से भी मार्केटिंग करवा रहे हो, make that rule that you have to get a personal touch. आप अपने real client से review लो rather than calling people to give a fake review. Because in this social media world, we all know who is an influencer and who is a real client. So let's change the marketing technique and make our clients more confident towards us, more trustworthy towards us. अगर हमने relations कमा लिए और थोड़ा सा पैसा कम कमाया, but उससे वो relations long term के लिए रहेंगे, and you will get more clients with that one client only. So make that as a rule. जो भी आपके loyal और trustworthy clients हैं, उनसे real review लो so that there is no need to call influencers. आपके ये real clients ही जब आपका review देंगे and it will attract the mass audience. The mass audience will also trust you that yes, that's a real client and they are giving the real suggestion, the real feedback. That's actually more important as compared to the influential marketing. Don't make it zero. If you have investment, if you have the budget, definitely involve influential marketing, but just make it as 10% of your marketing technique. Add the real feedback, add the emotional feedback. जहां पे आप client की need को समझोगे और उनकी पॉकेट को देख के काम करोगे, they will also be ready to push their budget, and I think it will also give you a positive aura to do your best for that client. I'm not asking you to reduce your cost by 50% or totally change your menu card, but as we all know that client is always right. तो अब एक emotional bridge बनाने की जरूरत है कि वो भी आपकी जरूरत समझे और आप उसकी जरूरत समझो. And I'm very sure if you will apply this suggestion to your business at your workspace, it will actually give you more profit and repetitive client as well. Because you have made sure that your client is more comfortable and emotionally attached. और जब आप उनसे बातें करोगे, अपने काम पे बैठने लगोगे, you will also feel more confident and your business aura will also increase. ये एक बार suggestion आप अपने business में apply करके जरूर देखिएगा. It will give you a huge lot of difference plus more profits as compared to your previous year. Thank you so much. I will see you in my next video.